Breaking updates now coming in. Fire has broken out at a Varanasi temple and 7 devotees have suffered burn injuries. A cotton tableau is said to have caught fire. 7 people have been injured and the fire brigade has been rushed to the spot. Fire took place during the Aarti that was being offered at the temple, and 7 devotees who were at the temple have been injured. These are the visuals from the spot. You can see the extent of damage that has been caused. The fire has now been doused, but at the time of the incident, there were devotees present there in the temple. My colleague Ashutosh is joining us on the broadcast with the details. Ashutosh, which temple was the fire reported from, and any details on what led to the fire? देखिए, ये वाराणसी का आत्म विश्वेश्वर मंदिर है और ये चौक इलाके में ये बना हुआ है और बेहद सकरी गलियों के बीच में ये मंदिर है। कल चूंकि सावन का आखिरी दिन था, रात में शयन आरती चल रही थी और इसी दौरान जो मंदिर में आरती के दौरान ही एक चिंगारी उठती है और धीरे धीरे उसने पूरे मंदिर परिसर को अपनी चपेट में लिया। आरती के समय लगभग 100 के आसपास जो श्रद्धालु थे वो उस दौरान मौजूद थे और इसी की वजह से जब चूंकि भगदड़ मचती है और लगभग 8 से 9 जो लोग हैं वो उसमें झुलस जाते हैं। हालांकि क्योंकि सकरी सड़कें थी, वहां तक फायर ब्रिगेड का पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लिहाजा जैसे तैसे स्थानीय लोगों ने वहां पर आग पर काबू पाया और जो स्थानीय जो झुलसे हुए लोग थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया। Okay, all right, Ashutosh, thank you for joining us with those details. 7 devotees have sustained burn injuries. They've been taken to the hospital. There was some panic at the temple now, but now the fire has been doused completely. With that, we're slipping into a quick break here. We continue getting you updates from there. We'll be right back.